From the following information, calculate material cost variance, material price variance, and material usage variance. So what they are asking us to calculate, they are asking us to calculate all the three material variances. Okay? Cost variance, price variance, and usage variance. Now the information which has been given to us is standard cost for 100 units is 800 kgs. जब हम 100 यूनिट्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो 100 यूनिट्स का कॉस्ट कितना है 800 kgs. Standard rate per kg is given, that is rupees 6.40. Okay, fine. Now actual production कितना हुआ है 4500 यूनिट्स. अब देखो 100 यूनिट्स का स्टैंडर्ड कॉस्ट जो 100 यूनिट्स का दिया है कि 100 यूनिट्स के लिए 800 केजेस विल बी यूटिलाइज, तो एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ है 4500. तो वी नीड टू फाइंड आउट द स्टैंडर्ड क्वांटिटी फर्स्ट बिकॉज डायरेक्टली अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज नॉट गिवन इन दिस सम. फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड देन we have to start with this sum. Same way, now see, material actual material use was how much 3,50,000 kgs, whereas actual material cost was 22,05,000 rupees. Now over here, see, standard quantity is not given, but they have given us the information to calculate the standard quantity. And over here, if you see, the actual rate is not given, so we can even find out the actual rate. क्योंकि देखो कितना था एक्चुअल में, कितना था मटेरियल का कॉस्ट 22,05,000 और वो भी कितना केजीज बना उसमें से 3,50,000 kg. तो वी कैन easily, if you divide this cost with the material used, you can easily find out the actual price. So जब भी ऐसे स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं दिया है एंड द एक्चुअल आउटपुट इज ऑलरेडी गिवन, तो हाउ टू कैलकुलेट? सी, वी हैव फर्स्ट यू नीड टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर द एक्चुअल आउटपुट. व्हाट इज द फॉर्मूला? स्टैंडर्ड इनपुट, जितना भी आपने इनपुट किया ओवर ईयर, कितना इनपुट किया है 800 kgs, डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट. तो जब 800 kgs का है तो उसका स्टैंडर्ड आउटपुट क्या था उसके लिए 100 यूनिट्स इनटू एक्चुअल आउटपुट. एक्चुअल आउटपुट कितना था 4,000. Here it will be class, just a minute, do over here 45,000 units. Actually we will be taking it as a 45,000 units. So let's find it out. Put this into the formula. Standard input कितना है 800 divide by 100 is your output into actual units is 45,000. So this will be how much? 3,000. Sorry, 3,60,000 kgs. 3,60,000 kg. Now same way you need to calculate the actual price as well. So calculate the actual price, actual material cost divided by material used. So 22,05,000 needs to be divided by 3,50,000 kgs. So if we divide this, we will be getting the cost per unit. Now this is the information which we got for per kg.
for the per kg. Now just we have to put this. अभी हमें देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी मिल गया यहाँ से. Got a standard quantity from here. We have calculated even the actual price. So now just put it into the formula and find out the variances. Now first one will be material cost variance. What is the formula? Standard quantity into standard price. So what is the standard quantity? 3,60,000 multiplied by standard price. Standard price is already been given 6.40 minus actual quantity. Actual में कितना प्रोड्यूस हुआ था? 3,50,000 into actual price. We have calculated right now 6.30. So just multiply 3,60,000 with 6.40 kg. This will be 23,40,000 minus 3,50,000 into 6.30. So 22,05,000. अब देखो standard cost is higher than the actual cost. So here we will get a positive variance. कितने का? Find out the difference. 99,000 का positive variance, that is which will be denoted by F, that is favorable. Now let's calculate the material price variance. Actual quantity. Now what is the actual quantity? 3,50,000 kgs. So write it down, 3,50,000 kg. Standard price. Standard price is 6.40 minus actual price is 6.30. Find out 6.40 minus 6.30 will be equal to 0.10 into 3,50,000 kgs. So you will be getting 35,000 favorable. Yes. 5,000. The next one will be material usage variance. What is the formula? Standard price and in bracket standard quantity minus actual quantity. What is the standard price? 6.40. Now standard quantity is 3,60,000 kgs. Minus actual quantity is 3,50,000 kg. 6.40. And what is the difference? Difference is of a 10,000. So this will give me 64,000 favorable. तो देखो यहाँ पर हमने जो भी वेरिएंस कैलकुलेट किए वो इन दिस ऑल दिस थ्री केसेस वी गॉट अ फेवरेबल वेरिएंसेस. So how we can do the verification? Material cost variance is equal to the material price variance plus material usage variance. We are just using the shortcuts. MCV, that is material cost variance, will be equal to MPV, that is material price variance, and plus material usage variance, that is MUV. So cost variance कितना था? 99,000 but favorable. Correct? ये दोनों का एडिशन करके if 99,000 हो रहा है तो it means our sum is correct. So 35,000 favorable. 4,000 favorable. We are done.
is how even you can do the verification part as well. Just note down the sum. Yes, one more thing class. अगर आपको कभी एग्जाम में से भूल जा रहे हो फॉर्मूला तो यस यू कैन डू इट डायरेक्टली फ्रॉम द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एज वेल. दैट 100 यूनिट्स बनाने के लिए व्हाट एक्चुअल कॉस्ट फॉर 100 यूनिट्स वाज 800 kgs. तो जब 45,000 यूनिट्स वी हैव प्रोड्यूस तो कितना kgs हमें मिला होगा. जस्ट डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड फाइंड इट आउट. सो हाउ यू विल बी डूइंग दिस. 45,000 into 800 divided by 100. This will be equals to how much? 3,000. Yes, 3,60,000 kgs. ऐसे भी कर सकते हो. हमने वही किया है. हमने भी तो क्या फॉर्मूला ही अप्लाई किया है. Standard input was how much? 800 kgs, whereas standard output was how much? 100. And we have to multiply it by actual output, that is 45,000 units.